Hello. Hello. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक मैम, आप ठीक है? हेलो तहरीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। And hello Ahmed. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine too, ma'am. Okay, let's बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, then we start. Okay. भाई कहाँ है बाकी लोग, क्यों नहीं आ रहे हैं? Rabia is here. Hello Rabia. Okay, Haris is here. Hello Haris. कहाँ गया हारिस? यस मैम, मैं इधर ही हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। Okay, a few more seconds and then we start. Okay. Okay, let us start. The Shaza is here with. Okay, Shaza. So we are now going to study. Okay. ये क्या हो रहा है? नहीं. Okay. Perturbation theory.
मैम ये लास्ट टॉपिक है ना क्वांटम ट्यूब का? जी बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये जरा लंबा है और इसके सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ आप थक गए हो लगता है, हाँ? नहीं नहीं है, नहीं मैम। अभी हम लोग मई के, ये फर्स्ट वीक है ना, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, तो इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग कि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? और हाँ मैम आपको रमजान। पता है हम अक्सर कोशिश करते होते हैं कि जो टॉपिक करें उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी कर लें, ताकि वो ज्यादा यस मैम। क्लियर हो जाता है ना। तो यस। हम ट्राई करते हैं। अब देखो ना, ये मुझे 5 मिनट शुरू में इंतजार करना पड़ा फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, तो वो 5 मिनट भी हम सेव कर सकते हैं, है ना? यस मैम। हाँ, तो प्लीज आप लोग टाइम पे स्टार्ट कर दिया करो, ताकि हम लोग जल्दी कर लें, ठीक है? ओके। अच्छा, व्हाट इज पर्टर्बेशन? क्या होता है पर्टर्ब करना? मैम हाँ जी, मैम पार्ट्स क्या कह रहे हो? पार्ट्स पाथ? मैम पार्ट्स पार्ट्स स्मॉल पार्ट? पार्ट्स। ऑल पार्ट्स? अच्छा, एनीवन एल्स? मैम हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? कौन बोल रहा है ये? मैं मोइस। मोइज। मोइज बेटा, आपको पता है ना कि मूडल में अपलोड कर देती हूँ मैं जो हमने किया होता है, आपको वो देखना चाहिए ना, आपको पढ़ के आना चाहिए। यस मैम, लेकिन वो मैं वैसे एक आइडिया लेना चाह रहा था। आइडिया ये तो नहीं ना, इस तरह तो नहीं ना कि आप खुद अपने नहीं पार्ट से नहीं पढ़े मैम, ना। मैं पूरा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन करें। मैं नहीं कह नहीं, रहा था कि वो आप जाओ चैप्टर में पहले, आपने किया। आप जाके पहले चेक करो, हद हो गई है। आप क्यों नहीं मूडल पे जाते हो? मैम मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछा। बेटा वो हमने कोई नया टॉपिक नहीं किया था, वही किया था जो हम कर रहे थे पहले, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जो हैं उन्हीं को कंप्लीट किया था उस दिन, ठीक है? और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम किया था। ओके मैम। ओके, सो व्हाट इज पर्टर्बेशन? आई कम बैक टू माय क्वेश्चन। जी जनाब, एनीवन वांट्स टू ट्राई? हाँ जी, कभी ये लफ्ज सुना है परटर्ब? इंग्लिश का ही वर्ड है, तो ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है? राइट? यस मैम। ओके, हाँ जी। तो फिर में किस तरह की डिस्टरबेंस हो सकती है? किस तरह की डिस्टरबेंस हो सकती है? फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल को क्या चीज डिस्टर्ब कर सकती है? एक फील्ड डिस्टर्ब कर सकती है ना? उसका, यस मैम, एक्सटर्नल फील्ड जो हाँ, हम उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। इसलिए कई दफा हम जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक्सटर्नल उस पे फोर्स नहीं लग रही या यस। इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में हमें पता है कि हमेशा फील्ड्स होती हैं, हर जगह फील्ड्स हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहां भी फील्ड्स हैं। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे आसपास? मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड, है। हाँ हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई, मैग्नेटिक हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो है ना। यस मैम। हाँ, तो देयरफॉर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। मतलब हमेशा मैथ्स में, फिजिक्स में, मॉडलिंग में, सिमुलेशंस में हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करें, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला डेवलप करना आसान होता है, उसकी ज्योमेट्री बनाना आसान होता है, उसकी डेरिवेशन करना आसान होता है। जाहिर है जब आप एक आसान सिंपल सिस्टम से करते हैं, तो फिर आप उसमें ऐड करते जाते हैं दूसरी चीजें, तो फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है आपका प्रॉब्लम, ठीक है ना? सो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम लोग श्रोडिंगर्स इक्वेशन को यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ सिस्टम और टू सॉल्व डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू अ सिस्टम, है ना? लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ पर्टर्बेशन, ठीक है ना?
क्योंकि एक सिस्टम जो है, सिस्टम एक पार्टिकल भी हो सकता है, सिस्टम एक मोर देन वन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन एटम एक सिस्टम है, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेरिवेशन की, वो भी एक सिस्टम है। लेकिन हमें पता है कि वो परटर्ब्ड होता है अंडर वेरियस इन्फ्लुएंसेस, तो उसकी वजह से फिर हमें कई दफा रिजल्ट्स ऑब्टेन करने में मुश्किल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपकी हो सकती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है ना कि हम अर्थ पे हैं और हम पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल आप मून और अर्थ का की ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो उसमें ये भी है कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं है, बाकी प्लैनेट्स की भी ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो है वहां उसमें एक्सर्ट हो सकती है। तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। और वो सिस्टम जो है वो परटर्ब्ड हो जाता है फिर, ठीक है। So the verb is perturbed, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हमें उसके लिए कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ती हैं, हम अप्रोक्सीमेट करते हैं और उसको सॉल्व करने की फिर कोशिश करते हैं, राइट। जब हमें पता होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पर्टर्बेशन थ्योरी इज वन ऑफ द मेथड्स जो कि यूज किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सो हमारे पास टू केसेस होते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी के, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास होता है टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा हमारे पास होता है टाइम इंडिपेंडेंट। Okay, so this was an introduction and I can erase this so that I can start with the first case, ठीक है। सही है। नो मैम, एक मिनट। अच्छा, ठीक है आप। यस मैम। ओके, okay, so let's start with the time dependent case. Okay, so in this case, for example, if you consider an atom in an electric field, in an electromagnetic field, let's consider this example, and let us suppose that the interaction is switched off. Okay, if the interaction is switched off, then let us say in this state, the Hamiltonian of the system is given by H with the superscript 0. ठीक हो गया, ये आप नोट करना है इस बात को।
Okay. Now let us turn on the field. मैम जब वो हमारे पास स्विच ऑफ था तो दोनों की एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं थी ना, दैट्स व्हाई हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है वो सुपर सबस्क्रिप्ट में 0 है। हाँ जी, ये अभी वही आपको वो सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमने कंसीडर किया है कंडीशन कि जब वो फील्ड नहीं थी, लेट अस अज्यूम कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, हालांकि रियलिटी में तो आप नहीं ना स्विच ऑफ कर सकते, लेकिन वी स्टार्ट विद अ सिंपल अजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि यू टर्न ऑन द फील्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे एटम क्या होगा, एटम एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यस और जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो वो क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, एक एटम जब एक्साइटेड होता है ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है, वो एक एनर्जी को रिलीज करता है रिलीज करता इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, है ना। यस मैम। ओके, सो इस केस में हम कहते हैं कि लेट अस से H1 बी अ स्मॉल परटर्बेशन। सो पहले वो एक्साइटेड था, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ गया जब आपने ऑफ कर दिया, और उसने एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। ओके, so let H1, H with the superscript 1, be a small perturbation. Which has caused this interaction, ठीक है? And hence the transition from the ground state to an excited state of the atom. तो जब आपने वो field on कर दी तो it's possible कि वो atom जो excite हो गया और वो ground state से excited state में चला गया, ठीक है। So since this transition is dependent on time and also the wave function psi will be a function of time, ठीक है। So as the perturbation or as the transition of the electron or the atom is dependent on time, so the wave function psi will also be a function of time. टाइम डिपेंडेंट भी होगा और जाहिर है वो पोजीशन डिपेंडेंट भी होगा। Okay, so now I want to erase the left hand side, ठीक है, सही है। यस मैम। लास्ट पे आपने कोऑर्डिनेट्स लिखा है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, ओके, सो लेट द आइगन वैल्यू इक्वेशन for the unperturbed system be given by so this is equal to H with the superscript 0 as we said before, and we are also putting the superscript 0 for the wave function. So let us say this is equation number 1. So M in this case represents a general state. The general state, and let us
And let us say for the ground state, m is equal to 1. And for the perturbed system, we will have the equation where we can represent the function as h with the superscript 0 plus h1, and so it is now a sum of the undisturbed state and the disturbed state. So h1, as we said, is the small perturbation as compared to h0, and h0 is the operator in the case of the absence of perturbation. Okay, can I erase the right hand side? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now the perturbed wave function psi will be given by psi is equal to psi1 0 plus psi with the superscript 1. So you will notice in this case that all the superscripts 0 represent the unperturbed system, right? And the superscript 1 represents the perturbed system. And if we have no superscript, then this is the total. Is that clear? I repeat again. The superscript 0 represents the unperturbed system, right? The superscript 1 represents the perturbed system, and the for example psi without any superscript represents a sum of both unperturbed and perturbed conditions. So it is the total. Okay. Now putting the value in equation number 2, we have so this is equal to a sum of the two Hamiltonians and a sum of the two functions. Okay. So now I have to write an equation. Let's see. So this is minus h bar over iota. We're opening the bracket, right? So this will be a little bit long. Let me go to the other side, I think. So let me go to the other side. Oh my God. Okay, I'm going to erase this here.
Okay. Okay, so now we can write this equation. There was a line here. Okay. मैम वैसे ये भी रेस कर ही दें. ये भी कर दूं, लंबी मैंने लिखनी इक्वेशन. यस मैम, अच्छा कर दें. ओके राइट. सो आपको आपके पास तो लिखी हुई है, ठीक है ना. सो दिस इज माइनस एच बार ओवर आयोटा partial psi 1 over partial t with the superscript 0 and minus h bar over iota partial psi 1 over partial t is equal to h with the superscript 0 psi 1 with the superscript 0 plus h with the superscript 0 psi with the superscript 1 plus h with the superscript 1 psi 1 with the superscript 0 plus h with the superscript 1 and psi with the superscript 1. So हमने ऊपर वाली brackets जो है वो खोल ली है, ठीक है ना. Okay. So first term on both sides will cancel due to equation 1. Okay. And the last term cancels because of the product of two small quantities. Okay, so therefore we have the above equation becomes minus h bar over iota partial psi 1 over partial t minus h with the superscript 0 psi with the superscript 1 which is equal to h with the superscript 1 and psi 1 with the superscript 0. So this is equation number 4. Okay, so I think I will now erase the board. Okay. नो मैम एक मिनट रुक जाए. अच्छा चलो, बाद में कौन एंटर हुआ था, मैं अटेंडेंस लगाती हूँ. इधर शजा आई थी एंड जमरान आया था, है ना. मैम आतिका. आतिका आई थी, ठीक. ओके अब मैं हाँ हेलो. इंटरनेट प्रॉब्लम थी इसलिए लेट. कोई बात नहीं, मैंने कहा मैम इंटरनेट. हाँ ठीक है, कोई बात. अच्छा, कैन आई रेज द बोर्ड नाउ? यस मैम. कैसे जीरो हो रही है, ये मतलब कैंसिल हो रही है? बेटा ये पीछे हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, उसमें ये दो टर्म्स जो है ये इक्वल थी, इसलिए ये कैंसिल हो रही हैं. ओके ओके, सो अब शमजर आया है. लेट्स सी, शमजर को आने दे. मैम मेरी अटेंडेंस लगा देनी थी, मैं भी लेट आया था लाइक आपकी 1-2 मिनट. आपकी लगा दी, मैं दोबारा एक दफा कॉल आउट कर लूंगी, ठीक है. ओके मैम. चेक कर लेंगे. ओके, सो we can expand the perturbed part of the wave function psi with the superscript 1
in terms of unperturbed wave function as psi with the superscript 1 is equal to the summation of Cm, which is dependent on t, and psi m with the superscript of 0. Now in this case, psi m0 is unperturbed wave function. Okay, and Cmt is the coefficient of expansion. Okay, so I think I should erase this now, okay, so that I can write the next equation. Erase कर दे इसको, जल्दी बोलो. Yes, ma'am. Yes, okay. अब आप इन चीजों को ध्यान में रखना, फिर हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द टू गेट द नेक्स्ट इक्वेशन. ओके, so substituting this value, in equation 4, we have the summation sign, and then we have this Cm dependent on t and partial t, and psi m with a superscript 0 minus h bar over iota sigma m Cm, and again partial psi m superscript 0 divided by partial t. So this becomes minus h0 sigma m Cm t into psi m superscript 0 is equal to h1 psi 1 0. Second and third terms will cancel due to equation 1. Okay, so we have minus h bar over iota sigma m partial Cm t divided by partial t and psi m superscript 0. So this is equal to h with the superscript 1 and psi 1 0. This is equation number 5. Okay, now we can multiply both sides by psi n star and apply orthonormality condition. And we will integrating
over all space. Okay, now I'm going to call out your attendance, and so Tahreem, Present, ma'am. good. Rabia, Present, ma'am. yes. Mariam, absent. Shaza, Present, ma'am. present. Hadi, absent. Mariam has now entered. Okay. Hadi, absent. Usman, absent. Haris, Yes, ma'am. good. Durdana, अच्छा दुर्दाना normally आती होती है, आज नहीं आई. So Durdana is not there. Moise, Yes, ma'am. good. Mohsen, Yes, ma'am. Zamran, Present, ma'am. good. Shamjar, Yes, ma'am. okay. Naseem, Yes, ma'am. good. And Atika. Yes, present, ma'am. कौन भला? आतिका ना? Ma'am, Mariam. मरियम, ठीक है, ओके. अच्छा जी, हमने अब दूसरी मीटिंग शुरू करनी है. ओके, सो दूसरी मीटिंग का मैं आपको आईडी देती हूँ. द आईडी इज 885. ठीक है, 885-7728-0422. ठीक हो गया? रिपीट कर दे मैम. 885-7728 885-7728. यस मैम, आगे. 0422. ठीक हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. चलो अब मैं इसको एंड करती हूँ और दूसरी को स्टार्ट करती हूँ. ठीक है?